Hi everyone, welcome back to Dr. Saurav Sir classes. We were doing some amazing questions from CUET UG psychology paper, and we have solved two questions. Two questions are left out. This is third one. So we will be solving it right now. Let's focus on the question. So before that, before I start the question, let me tell you one thing. I hope that you have already watched our videos, and from our videos probably you have enjoyed those videos and you have learned from these videos. Hopefully my way of teaching has helped you a lot, because I try to provide, I work really hard for you guys so that you do not miss out a single point or single pointer, or I think no option should be left out. Every option should be clearly analyzed, every option should be clearly explained to you. This is my first goal, so that whenever you are watching a video you get each and every information handy and in detail. Okay, you don't have to go here and there to search for some other information or other videos or paperwork, nothing. You just watch one 10 minutes or 12 minutes video and you get a concept clearance. You get of course not the entire subject or the entire paper, definitely related to that particular question. And when you talk about this kind of questions, they are so interrelated that if you just clarify one question, you are almost like clarifying two or three questions at the same time. Okay, so that has to be the ultimate dream or ultimate goal, and I think you are achieving it. Whenever you are doing it, you are learning that the way or the pattern that that you are actually doing one question, but you are actually on the other hand, if you see, you are learning 3 or 4 questions at the same time. So this is the way we should learn and we should proceed. And even after watching our videos, I always tell that please let us know what are the papers we should solve, what are the questions we should solve, which year's paper you are facing problem. Let us know, we will definitely try to solve them, we will definitely try to help you out. Okay, now let's focus on the question. Arrange the following from the highest to lowest level of correlation in terms of IQ. The correlation between siblings reared together, the correlation between identical twins reared together, the correlation between siblings reared apart, the correlation between identical twins reared in different environments, the correlation of fraternal twins reared together, and the combinations are given. Tell me. See, the correlation in IQ it refers to the degree of similarity in intelligence scores between individuals influenced by both genetic similarity. It talks about genetic similarity at the same time, which is heritability, and environmental factors. Clear? Now let's focus on the question. Arrange the following from the highest to lowest level of correlation in terms of IQ. So we must compare genetic similarity, that is gene shared, and environmental similarity, same versus different upbringing. Okay, now the core principle is, basic principle is, more shared genes plus same environment minus highest correlation, or it's not minus, sorry, it relates to highest correlation. Okay, less shared genes plus different environment okay, what happens, it's lowest correlation. Okay, now key genetics facts. Okay, let's talk over here. Identical, when we have got identical twins, monozygotic,
Then we have got 100% similarity. We have got 100% similarity. Okay, when we have got fraternal twins, that is dizygotic, we have got 50% and siblings 50%. Clear? First, so we have to arrange them in the following order. Okay, so it's saying the correlation between siblings reared together, we know it's 50%. Okay, let's wait from lowest level, highest to lowest level. Okay, highest to lowest level, just remember this. Okay, then comes the correlation between identical twins reared together. Of course it will be the highest, 100%. रेयर टुगेदर, दे आर ग्रोइंग अप टुगेदर, ठीक है। एक तो आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विंस है और एक साथ बड़ा हो रहा है, तो वैसे भी बड़े हो रहे, तो वैसे भी वो लोग 100% ही होगा, तो बी से शुरुआत होगा, ठीक है। तो बी से यहाँ पे 2 है, बाकी 2 नहीं है, तो इनको हम लोग हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सी द कोरिलेशन बिटवीन सिबलिंग्स रियर्ड अपार्ट, ये तो बहुत ही कम हो जाएगा, ये तो एकदम से कम हो जाए, 50% से भी नीचे चला जाएगा, तो इसको हम थोड़ा होल्ड में रखते हैं। द कोरिलेशन बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस रियर्ड इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, आइडेंटिकल ट्विंस है पर रियर्ड इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, देखो यहाँ पे एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है। सो 100% जीन तो है, 100% जीन है, जैसे कि यहाँ पे 100% जीन है प्लस 100% सेम एनवायरनमेंट है, सेम एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो, डी में क्या हो रहा है, डी में जीन तो 100% है, डी में जीन 100% है, बट डिफरेंट एनवायरनमेंट स्टिल वेरी हाई, ओके, डिफरेंट, तो थोड़ा सा तो बी से घटेगा, डिफरेंट एनवायरनमेंट, ओके, ये स्टिल बहुत ही हाई होगा, ठीक है। तो पर डी बी से थोड़ा सा कम होगा, बी से थोड़ा सा घटेगा, तो यहाँ पे बी डी होगा, बी डी, सी बी डी ई ए सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज बी के बाद डी आएगा, ई तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। ई क्या है, ई बोल रहा है द कोरिलेशन ऑफ फ्रेटर्नल ट्विंस रियर टुगेदर, हाँ 50% चांसेस है, ठीक है। अब ई बोल रहा है 50%, तो जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया है, 50% है, क्योंकि 50% जीन है और सेम एनवायरनमेंट है, उसके साथ साथ क्या है, सेम एनवायरनमेंट, मॉडरेट, ये मॉडरेट। ई आएगा, डी के बाद आएगा, ठीक है, बीच में डी आ जाएगा, बी डी ई हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा द कोरिलेशन बिटवीन सिबलिंग्स रियर टुगेदर, जो 50% वाला है, 50% जीन्स है, उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद क्योंकि ये सिबलिंग है ना, तो जो भी हो फ्रेटर्नल, तो आप कह सकते हो कि बी के बाद डी आ रहा है, उसके बाद अगर ऑप्शन में ई है और दूसरा ऑप्शन में बी डी ए है, तो हम कौन सा चूज़ करें। अगर यहाँ पे ये दे दिया होता 3 और 4 में कि बी डी ई ए सी के बदले बी डी ए ई सी, तो तुम कौन सा चूज़ करते, तब बताओ। देखो फ्रेटर्नल हो इसका मतलब डाइजाइगोटिक है, फ्रेटर्नल का 50% है, वहाँ पे सिबलिंग्स का भी 50% है, बट ये एक साथ पैदा हुआ है ना बाबा, तो फ्रेटर्नल का थोड़ा सा तो वैल्यूएशन आगे जाएगा, ट्विंस है, एक ही मतलब एक तरह दिखता नहीं है, पर एक ही वक्त पैदा हुआ है, इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई जाएगा, तो ऑब्वियसली ये बी डी ई ही होगा पहले, ठीक है। 50% जीन्स प्लस सेम एनवायरनमेंट, तो ये हम पहले बता दिया है, सेम ये इसकी तरह है, सेम एनवायरनमेंट, ठीक है। स्लाइटली लेस मतलब सिमिलर टू फ्रेटर्नल ट्विंस, बट यूजुअली स्लाइटली लेस सिमिलर प्लस सेम एनवायरनमेंट। तो ट्विन अगर कहीं पे आ जाए, देखो मोनोजाइगोटिक आएगा तो ये 100%, मोनोजाइगोटिक सेम एनवायरनमेंट, तो ये सबसे ऊपर होगा, मोनोजाइगोटिक डिफरेंट एनवायरनमेंट उसके नीचे, उसके बाद डाइजाइगोटिक सेम एनवायरनमेंट, डाइजाइगोटिक डिफरेंट एनवायरनमेंट, उसके बाद आएगा सिबलिंग्स सबके बाद, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे लास्ट क्या बचा हुआ है, तो कोरिलेशन बिटवीन सिबलिंग्स, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब 50% इज लोवेस्ट कोरिलेशन,
दूर दूर में पले बढ़ रहे हैं, इसमें कुछ मतलब उतना कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आइडेंटिकल प्लस, तो यहाँ पे एक चीज लिख लो, आइडेंटिकल प्लस टुगेदर, ये क्या हो जाएगा, ये हाइस्ट। ओके, आइडेंटिकल प्लस अपार्ट, ये हो जाएगा स्लाइटली लोअर। ओके, उसके बाद आ जाएगा फ्रेटर्नल प्लस टुगेदर, जो कि मैं भी बोल रही थी, वो आ जाएगा मॉडरेट में, ठीक है, मॉडरेट में। उसके बाद आ जाएगा फ्रेटर्नल अपार्ट, लेसर देन मॉडरेट। इसके बाद आएगा सिबलिंग्स टुगेदर, ये हो जाएगा लोअर, और सिबलिंग्स प्लस अपार्ट हो जाएगा लोएस्ट। क्लियर? Okay, now this question reflects heritability of intelligence. So, key findings from research are identical twins even when reared apart show high correlations, that is, and the correlation they show when identical twins they are reared apart, they basically show correlation from 0.7 to 0.8. Are 0.7 to 0.8 correlation, okay, and show strong genetic influence. So environment still matters a lot, and this can be we can link with Galton, who gave heredity of intelligence, and Bouchard et al. Minnesota twin study. It's identical twins read apart. Gene first, then environment, etc., etc. I am not going in all depth thing, okay. Yeah, this question is done, and we are left out with only one more question of psychology. Please come back there and we will finish a psychology series over there. So I think I have explained it quite clearly, and the narration was quite vivid, quite broad. I think you shouldn't have any problem, but if you see there are certain questions, there are doubts, please feel free to call us. The number is very much on the screen, and have a lovely day ahead. Bye bye, take care.